So, hey everyone, today we are going to learn about computer architecture and organization. What does that mean? Computer architecture and organization means how computer is internally and structurally designed by a company. Now, first, computer architecture and organization. In this video, we are going to learn about computer how computers are organized, arithmetical operation like addition, floating point arithmetic, input output system, memory and bus system, pipelining and performance, basic structure of computer. As you can see, types of computer, what and all we are going to cover. First, computer types. Computers are divided based on the shape, size and speed of the and processing power. You can see many computers like mini computers, microcomputers, mainframe computers and supercomputer. They are differenced by their size, speed and processing power. First, microcomputer are nothing but PCs which normally every person uses at home. Then we have mini computer, which is used for small businesses like running a website, like that. Next, mainframe computer, it is large powerful system for bulk data processing. Mainframe computers are used for big organizations. For working of a whole organization is controlled by mainframe computers. Supercomputers like weather forecasting and extremely supercomputers are extremely large, so they are used there. You can see the comparison table here. Microcomputers are smaller in size, mini computer are medium, mainframe computer are larger and supercomputer are very larger. Speed, according to speed, if we categorize, microcomputer have moderate speed, it is not too fast, not too slow. Then mini computer, it is very fast in work, and mainframe computer is very fast. Next, supercomputer is extremely fast because, as you know, you'll get weather forecasting within seconds. So because of that, it need to be extremely fast. Processing power, how they processes, what are the time they take to load a data, that is processing power. Mini computer have low processing power. Then microcomputer have medium. Mainframe computer have high processing power, it can process high or huge amount of data. Supercomputers are very high processing power. User supporter, we have microcomputer because it is PCs, a single user can use it. In mini computer, multiple users, like in small businesses, a single person like HR can verify all the officers or workers in same computer. Then mainframe computer, we can view hundred and thousands of records because it is used for bulk data processing. And supercomputer for specialized application only. Typical use, as I told, microcomputer are PC which is used for work, school, education, etc. Mini computers are used for department like school, college running and all. Mainframe computer, large organization like any industry, it might be any industry or any company. Supercomputer are mostly used for scientific research and simulating complex calculation. Example you can see here. Functional unit of computer is input and output unit. Input unit, what does it do? It collect the data. That means if you are getting a data from a user, that collecting the data from the user is input unit. अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, जो हम कीपैड में टाइप करते हैं वो एक इनपुट यूनिट की सहायता से कंप्यूटर के अंदर जाता है. Next, memory unit. Memory unit, what does it does? The input data which was collected is stored there, and instruction of processing what and all instruction we typed, it is stored in the memory unit. अगर मैं easy बताऊं तो वो सब जो input data, अगर मैंने कहा add 8 plus 5, this data is stored in the memory. A memory space is allocated separately for this addition operation. Next, ALU. What is ALU? एलयू का मतलब है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. नाम से ही पता चल रहा है ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है. अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो, और लॉजिकल ऑपरेशन एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एंड.
परफॉर्म करता है. नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट controls all components and coordinate which should be solved first, where should be the output be placed, when should we give the output. All this is managed by control unit. Like if any ALU is not functioning, what should we do, that control unit handles. Output unit, it shows the output to the users, like monitor shows the output for us, so monitor can be used as a output unit. Now processor architecture. In previous we used two architecture, one is von Neumann model and another is Harvard model. Mostly now we are using Harvard model. Control unit was placed in the CPU, which was basically not correct. Control unit, ALU and memory unit, both three of them was placed in the CPU and output. In Harvard model we have separate data memory, we have separate instruction memory, means each process is getting its own memory address so that it doesn't collapse easily. You can see the difference between Harvard and non-Neumann architecture. Harvard name came from Harvard Mark E, and the von Neumann architecture name was named after the computer scientist John von Neumann. It requires two memory for the instruction and data, as in Harvard model for instruction memory and data memory both are separate, so it needs two memory space. But in von Neumann model we have only one memory, because data and instruction memory are same in that. Designing a Harvard architecture is complex, and this one is simple. Harvard architecture is complex because we are allocating both separate memories to manage all the memories separately. It is hard, but in von Neumann model it is easy to manage. And architecture. Harvard architecture is required separate bus for instruction and data, because data memory and instruction memory are placed separately. We need bus to transport the data and instruction separately. Data memory transfer the data to the control unit, and instruction memory transport the instruction to the control unit, so we need two bus structure. In von Neumann architecture we need only one bus structure, which is enough because we are not transporting much. Processor can complete an instruction in one cycle. Processor need two cycle to complete an instruction. Here both the data from data memory and instruction memory is simultaneously sent to the control unit, so data can be performed in one cycle. Processor. But in von Neumann model we have only one bus, so it transport data, then it transport instruction, so it need two cycle to complete an instruction. Easier to pipelining, so high performance can be achieved. In Harvard architecture it is easy for pipelining, and in Neumann it is comparatively harder. Harvard architecture have high cost, and von Neumann architecture it is cheaper. Arithmetical and logical unit and control unit. So we are going to learn about arithmetical, logical and control unit. Arithmetical and logical unit, that is also known as ALU. What does it do? Arithmetic performs the arithmetical operation, addition, subtraction, multiplication, modulo, division, etc. A logical unit perform logical and logical or logical not operation. Control unit, it manages, it fetches instruction from memory, decode them and tells other units what to do. इसका मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है. वो पहले दूसरे से इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर उसे डिकोड करता है, क्योंकि ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टेकन इन बाइनरी, इट इज़ डिकोड करने के बाद वो जाके यूनिट, जो अगर अर्थमेटिकल यूनिट या CPU को जाके बोलता है कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है. सो इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द टू. Basic operational concept we have: fetching, decoding and execution. First we have to fetch the data from user, then decode, which is control unit will perform, then executing the instruction. Memory unit, primary memory unit, is divided on speed, cost and capacity. Like cache memory, we have three primary memories, that is cache memory, primary memory and secondary memory. Memory unit is divided into three.
Cache memory most of the time you uses, as I know everyone uses cache memory for in your phone. If you see your search history, that is nothing but cache memory, which is stored in cache. Execute faster, since we don't need to go to the main memory to search for the instruction. Directly we can see the cache, search for instruction in cache memory and display the output. So it is faster, and it is located inside or near to the CPU to store frequently used data. It stores only frequently used data, it doesn't store the previous data. Primary memory, it is the main workspace. It is volatile RAM and non-volatile ROM. It primary ROM, read only memory and random access memory. Then we have secondary memory. Secondary memory, that is hard disk like HDD, SD, pen drive, and all comes under secondary memory. We can store data there. As I told, basic operation is fetch, decode, and execute. Next, arithmetical operation, integer representation. For performing arithmetical operation, we need to represent the integers. We can represent integers in three ways. One is integer itself, one is floating point numbers, or we have characters. First, integers. If we input 5 minus 5, that is an integer input, so it can be classified as integer. We can use multiplication using Boole's algorithm, and all. For that we need 2's complements and 1's complement. How to find 1's complement and 2's complement, we already know. Next, floating point number. What a floating point number? That is nothing but decimal numbers. All the decimal numbers come under floating point numbers. Next, used in decimal numbers, like floating point number is basically used where precise values we need. Example, for scientific research, or maybe it's temperature or balance of an account, we need precise values, so we use floating point numbers. Then we have character representation. Alphabets, as you know, ASCII value. We have each alphabet have a ASCII value. If you type any alphabet, its ASCII value is taken and the operation is performed. Need for different numbers. Why we need integer number, floating number, etc. First, integer number used when exact values are required. We need exact value, we don't need point value or decimal values, so we use integers. It doesn't have any point values. It is mainly used for counting and indexing. In array indexing or in Python and all, we use integer. Next, it is no rounding error, because it doesn't have decimal values. We don't need any round of the value, so it doesn't have any rounding of errors. And you can see example as number of students is 60. You can't tell numbers of student is 60.7 because 0.7 students cannot be present. So next, loop counter, array indices, and memory addressing. Floating point number, it is used when fractional values are required. When we need decimal values, we use floating point numbers. Suitable for scientific and real world measurements, like measuring length, breadth, and all, and scientific research, speed of light and all, we need floating point numbers. It can represent very large to very small numbers. Since it is decimal value, we can represent 0.001 smaller value till 0.999 larger value, or more larger than that also is possible. Examples, temperature is 36.5, which is nothing but a floating point number. Voltage is 3.3, and scientific calculation, graphic, and AI. Next, difference between integer and floating point number. As I told, integer, it is whole number without fraction values. Opposite, floating point numbers has fraction values. Example, and as you know, minus infinity 0 and plus infinities comes under integer number. In floating point number, we have minus 0.01. We can use exponential also in floating point number. Integers are stored directly in binary, because minus is also treated as 1, so you can store it is in binary, 2's complement and 1's complement. Floating point number, it is stored as sign plus exponential plus mantissa. That is nothing but IEEE 75154 rule states that sign and
exponential and mantissa should be included in a floating point number. Precision. Since integer we need exact representation, precise value is important. In floating point we use approximate values. Integers has limited range, and it has limited range, but floating point numbers have large numbers of range. Arithmetical speed is very fast, because integer number we can easily convert to binary, but floating point number we have little slow speed, slightly slow. Memory uses less, memory uses more memory usage. Integer uses less memory, since floating point we have to represent sign separately, exponent and mantissa separately, we need more memory for that. Errors, as I told, no rounding of errors, because it does not have any rounding of values. And in floating point we have rounding of error and precision error. Next types of number system, we have fixed point numbers. What is fixed point numbers? A fixed point numbers is a number representation where the decimal binary points is fixed at a predefined position. Unlike floating point numbers, the position of the point does not change. In fixed point numbers, only the point is fixed. You can't change the place of the point values. That is the main difference between fixed point numbers and floating point numbers. We have integer part separated by fraction part, like 12.5. The point value point can't be changed. Next, the numbers of bits allocated to integer and fraction part is fixed. As I told, it has only two parts, that is integer part and fraction part. In floating point number, you saw we have three part. In that we had sign, exponent and mantissa, but in fixed point number we have only integer and fraction part. So both the part have fixed numbers of bits allocated. Why we use fixed point numbers? Because it is faster than floating point number, requires less hardware complexity, that means it is easier, and lower power consumption, it consume less power. Application, embedded system and microcontroller. Most of the microcontroller, they like 8056 and all, uses fixed point numbers. Digital signal processing, audio and image processing, also we use fixed point numbers. Real time system control system. Next, difference between fixed and floating point numbers. As I told, fixed points, we can see here difference. First feature is a fraction support. Integer doesn't support fraction because it is a whole number. Fixed point numbers, it has fraction value, so it supports fraction numbers. Floating point number also have fraction because the point value is fixed. The decimal point, integer doesn't have any decimal. Fixed point have decimal, that is fixed position, and floating point variable position. It can have 12.0 or it might be 123.1, like that. Next, integer we have exact precise value. In fixed point value, it's in between exact and high, like limited between predictable, high but approximate value. In floating point we have approximate value. Integer range is very small. Fixed point number range is medium, it's not very large, it's not very small. But floating point number, as we discussed, its range is very large. Hardware cost, integer cost very less hardware. Fixed point numbers also cost low, but floating point number costs high, so most of the computers mainly uses fixed point numbers. Speed, integer is very fast, fixed point numbers have fast, and floating point number is slower. Next, we have floating point number example. We'll see. If you want to add 0.1 plus 0.2, how will you add? In normal addition you can add 0.3. What computer gets? That is 0.3000. That is because it is point value and it has large range, so floating point number will includes the end 0 and starting 0.
And because a computer uses binary 0 and 1, you cannot store 0.1 or 0.2 exactly, because there is no, we might get some error during this operation. Example here I used, like if you cut a 1 rupees coin into 3 parts, you can't get equal, like 0.33, 0.33, 0.33 also if you add, some values might get lost. So because of that. Next, character representation. How to represent character? It is basically used in any name or character. Features are used as a binary to represent the character. Performance, technology and parallelism. What is technology and parallelism? Most of them get confused about technology and parallelism. Technology is improvement in VLSI, very large scale integration, allows more transistors on a chip, increases speed. Nowadays we have heard about the term technology, which is nothing but the old model had very less speed, but many very large scale integration, we used big chips, but now the chip size is decreased and its speed is also increased because of this very large scale integration technology. Next, parallelism, doing multiple tasks at once. As you know, CPU can perform multiple tasks using bus structures and pipelining. So parallelism can it can help parallelism. Pipelining, overlapping different stages of instruction execution. Pipelining is nothing but, now if you execute instruction 1, instruction 2, so I can execute the program to instruction 1 when execution of instruction 1 is going on. That is known as pipelining and overlapping difference. Next, multi-core processing. Using multiple CPU on a single chip is multi-core processing. Multiple operations you can perform. Next, we have analogs. The pizza kitchen example, you can see day-to-day example where how to increase the performance, how did the company worked on increasing the speed and reducing the size of the chip. In if you see an example, जैसे अगर हम बात करें कि हम एक पिज़्ज़ा किचन में काम कर रहे हैं, सोचो तुम एक मैनेजर हो एक पिज़्ज़ा किचन के, उसमें तुम्हारा क्या गोल है? योर गोल इज़ टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस. तुम्हें ज़्यादा अच्छा काम करने वाले लोग चाहिए ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में पिज़्ज़ा प्रोड्यूस हो सके. पहले तुम क्या करो? एज ए रेस्टोरेंट यूनिट व्हाट विल यू डू? फर्स्ट, परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, द बेटर टूल अप्रोच. फर्स्ट व्हाट आई डू, दिस represent the hardware advancement at a physical level. I will employ more persons, more workers or more shifts so that I will get the maximum numbers of pizza served per hour. So that is nothing but using technologies. Faster transistor, better clock speed. That in chip we used faster transistors to enhance the speed. We used faster transistor, better clock speed and more efficiency. As you added many shifts to increase your pizza serving, same in our chip we added more transistors and clocks so that we can get better performance. Again, if you see an example, you buy a high-tech oven that cooks pizza in 2 minutes instead of 10. You give your chef a sharper knife and faster dough rolling machine. तुम एक और काम कर सकते हो, ज़्यादा एम्प्लॉय की जगह तुम क्या कर सकते हो, एक उसके साथ एक नया ओवन भी खरीद सकते हो ताकि पिज़्ज़ा जो 10 मिनट में एक पिज़्ज़ा तैयार होता था वो 2 मिनट में तैयार हो सके. अगर इसको हमने चिप के सहायता से देखे, इसका मतलब पैरेललिज्म, मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. इंडिविजुअल टास्क इज completed faster because the equipment is superior. अगर अच्छा चिप रहा तो हमारा इंडिविजुअल टास्क या कोई एक टास्क जो हम कर रहे हैं वो फास्टर हो सकता है. नेक्स्ट, पैरेललिज्म के एग्जाम्पल देखें. द मोर वर्कर अप्रोच. अगर पैरेललिज्म के हिसाब से देखें तो हमें ज़्यादा वर्कर्स डालने चाहिए ताकि पिज़्ज़ा जल्दी बन सके. Using multiple cores, pipelining or threads. You can use single line thread or multiple line thread to handle many instruction at a times. अगर तुम्हें सिर्फ पिज़्ज़ा का ऑर्डर देना है,
उसके साथ बर्गर का ऑर्डर भी आया। तो ये दोनों टास्क को हैंडल कैसे करना है वो पैरेललिज्म करता है। अगर चिप में देखें तो अगर मैं यहाँ ये साइड कोड रन कर रही हूँ और दूसरे साइड वही पीपीटी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दोनों टास्क साइमल्टेनियसली चल रहा है। क्यों? पैरेललिज्म की वजह से। अगर तुम पैरेललिज्म अप्रोच करो, अगर एक टास्क धीरे से चल रहा है लेकिन फिर भी दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग वी हिट ए पावर वॉल वेयर वी couldn't just keep making simple processor faster. Technology became because they would get too hot. हमने और ज़्यादा फोर्स करके चिप को छोटा नहीं या ज़्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश नहीं की। अगर कोशिश की होती तो वो ज़्यादा कुछ हीट प्रोड्यूस कर। टेक्नोलॉजी ensure each individual calculation is done using the least amount of energy and time. टेक्नोलॉजी क्या करता है? हमारा काम को आसान बनाता है और हर काम कम एनर्जी और टाइम में करने की कोशिश करता है। इसीलिए अगर तुम कोई घर में अगर एक मिक्सी लाते हो, क्योंकि तुम्हारा टाइम बचता है, जल्दी करता है, तुम्हारा एनर्जी को सेव करता है। नेक्स्ट, पैरेललिज्म एंश्योर दैट वी डोंट जस्ट वेट फॉर वन कैलकुलेशन टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट। पैरेललिज्म क्या कहता है? तुम एक काम के लिए मत रुके रहो, एक काम के साथ दूसरा काम भी स्टार्ट कर दो ताकि दोनों काम चलता रहे। Performance in technology is how fast a single step happens. Parallelism is how you many step you can do at the same time. टेक्नोलॉजी क्या करता है? पैरेललिज्म टेक्नोलॉजी फास्टर वर्क पर काम करता है और पैरेललिज्म कितने ज़्यादा स्टेप्स तुम एक साथ कर सकते हो उसको देखता है। मेमोरी लोकेशन एंड बाइट एड्रेसिंग। मेमोरी लोकेशन क्या होता है? मेमोरी लोकेशन कहाँ पर, अगर हमने एक इनपुट कमांड दिया डिवाइड 8/5, तो उसके लिए पहले क्या होगा? एक मेमोरी अलोकेट होगा। हमें कैसे पता चलेगा वो मेमोरी कहाँ अलोकेट किया है, कैसे वो मेमोरी पर जा सकते हैं, उसका एड्रेस कैसे मिल सकता है, वो सब हम पढ़ेंगे। मेमोरी लोकेशन और बाइट एड्रेसिंग कैसे होता है। पहले, हाउ CPU सीज द ऑर्गेनाइज मेमोरी ईच बिट। जैसे तुम अगर एक स्टैक एग्जाम्पल लो तो एक के ऊपर एक बुक शेल्फ के एक के ऊपर एक बुक्स अरेंज कर सकते हो, तुम्हें ऐसा दिखता होगा। लेकिन कंप्यूटर के मेमोरी में अलग अलग, एक बुक यहाँ है तो एक बुक दूसरे कॉर्नर में, तीसरे बुक 4th रो में है। वैसे ही अलग अलग अरेंज हुआ नहीं है, बस एक लिंक क्रिएट किया है, दैट इज एड्रेस। मेमोरी स्ट्रक्चर, मेमोरी इज़ वास्ट, क्योंकि तुम्हें पता है मेमोरी बहुत बड़ा है। ऑर्डर्ड अरे ऑफ इंडिविजुअल स्टोरेज सेल ईच होल्डिंग 8 ones. व्हाट इज मेमोरी? इट इज ऑर्डर्ड सेल्स, इंडिविजुअल स्टोरेज सेल्स ईच होल्डिंग 8 bit मेमोरी। वो क्या है? एक लाइब्रेरी में अगर तुम जाओगे तो एक बड़ा शेल्फ देखोगे, उसमें एक एक शेल में, एक में हिस्ट्री का बुक होता है, एक में जियोग्राफी का बुक होता है। इसका मतलब वो एक सेल जो पूरा लाइब्रेरी के वो सेल्फ को एक शेल मिलता है, उसे कहते हैं मेमोरी। उसमें 8 बुक्स रख सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है। तो वैसे ही मेमोरी के एक सेल में तुम 8 बिट्स तक एड्रेस डाल सकते हो। नेक्स्ट, बाइट एड्रेसिबिलिटी। Every single byte in an array is assigned a unique sequence number addresses. This is the fundamental way of CPU pinpointing data. वो जब भी बाइट एड्रेसिंग होता है तो CPU क्या करता है? उसे एक नंबर, एड्रेस नंबर दे देता है ताकि एक्सेसिंग द कंटेंट इज ईजियर। CPU access. When CPU need data, it specifies the exact memory address for which to retrieve और store information. अगर CPU को कोई भी डाटा चाहिए, अगर मैंने कहा int a is equal to 10, b is equal to 12, और वही उसके बाद मुझे करना है int a plus b, अब CPU को कैसे पता चलेगा थर्ड लाइन में a कहाँ है? उसके लिए CPU क्या यूज़ करता है? वो एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस हमें CPU को देना होगा, दैट इज एड्रेस ऑफ ए। एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन इंस्ट्रक्शन लाइक लोड आर नॉट 0x004, it means fetch the byte of word depending on context, store at memory address and put it into register 1. अगर एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जाम्पल लिया है लोड आर नॉट। ये लोड आर नॉट क्या करता है?
पहले एक मेमोरी से इंस्ट्रक्शन, अगर एक वर्ड डॉक्यूमेंट है उससे सभी वर्ड को पढ़ के उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या करता है, एक मेमोरी एड्रेस दैट इज 000x004 में स्टोर कर देता है। स्टोर करने के बाद ये मेमोरी एड्रेस पुट कर देता है किसमें, रजिस्टर में डाल देता है। वर्ड अलाइनमेंट, वर्ड कैसे अलाइंड है, दो वेज है, बिग इंडियन और लिटिल इंडियन, जो आगे चल के देखते हैं। डेफिनेशन, वर्ड अलाइनमेंट क्या है? वर्ड अलाइनमेंट मीन्स दैट मल्टी बाइट डाटा आइटम्स, एग्जाम्पल ए 32-bit integer which is 4 bytes are stored starting at a word, it was start at address 04814, क्योंकि एक वर्ड 4 बिट्स का होता है, वो 04812 मेमोरी एड्रेस में स्टोर करते हैं। विच इज़ 4 बाइट, एक वर्ड 4 बाइट का होता है। स्टार्टिंग वर्ड कैसे स्टोर करते हैं, एक स्टार्टिंग एड्रेस लेते हैं, अगर 0 से स्टार्ट किया तो फिर 048 कंटिन्यूसली स्टोरेज होता है वर्ड को। वाई इट मैटर्स, CPU आर बिल्ड टू एफिशिएंटली रीड एंड राइट एंटायर वर्ड और डाटा इन ए सिंगल मेमोरी एक्सेस साइकिल। हमें वर्ड अलाइनमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता है CPU कैसे काम करता है, वो सभी डाटा को दूसरे सेल्फ या दूसरी जगह पे रख देता है। इसलिए अगर एक्सेसिंग ईजी होता है तो हम वर्ड अलाइनमेंट यूज़ करते हैं, ताकि अगर एक वर्ड दिस इज़ ए कैट, अगर दिस पता चल गया तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस कहाँ है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, वर्ड अलाइनमेंट CPU के परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है? व्हेन डाटा इज अलाइन द CPU कैन फेच इट इन वन स्विफ्ट ऑपरेशन। अगर वर्ड अलाइन है, अगर या डाटा अलाइन हुए हैं तो तुम इजीली उसे पढ़ सकते हो, CPU इजीली पढ़ सकता है। अगर वैसे ही जैसे तुम अगर डिक्शनरी खोलोगे तो वर्ड अलाइन होता है, पहले पूरा A लेटर का वर्ड होता है, फिर B लेटर का वर्ड होता है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। वैसे ही CPU क्या करता है, अगर वर्ड अलाइन या डाटा अलाइन करके रखते हैं तो इजीली एक्सेस होता है। अगर डाटा अनअलाइंड है, इसका मतलब अगर अलग अलग जगह स्टोर हुआ है, CPU को बहुत सारा मेमोरी चाहिए होगा ताकि वो रीड कर सके कौन सा डाटा कहाँ है, और एक साथ लाने में उन्हें बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। स्लो डाउन्स द परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से CPU का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है, इसीलिए वर्ड अलाइनमेंट ज़रूरी है। बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन, बिग इंडियन क्या होता है, हम वी स्टोर द मोर सिग्निफिकेंट बिट एट द लोएस्ट मेमोरी एड्रेस। लोएस्ट मेमोरी एड्रेस मतलब पहला मेमोरी एड्रेस पर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे अगर थिंक इफ यू आर ए रीडिंग, थिंक ऑफ इट एज रीडिंग द नंबर नेचुरली। एग्जाम्पल तुम वहाँ देख सकते हैं, यूज्ड बाय मोटोरोला नेटवर्क प्रोटोकॉल। बिग इंडियंस कौन यूज़ करता है अभी, मोटोरोला नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ करता है। नेक्स्ट, लिटिल इंडियन क्या होता है, इसका उल्टा है, स्टोर्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एट द लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पॉसिबल। ये क्या करता है, लीस्ट मेमोरी एड्रेस होता है उसको लोएस्ट मेमोरी एड्रेस पर स्टोर करता है। क्रूशियल फॉर interoperability. This distinct is virtual when exchanging data between different systems or when directly accessing binary files are misinterpreted. The order leads to corruption data. कभी कभी डाटा करप्शन हो सकता है, उसे कहते हैं crucial for interoperability. नेक्स्ट, एक्सेसिंग नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। अभी हमने देखा वर्ड कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ड अलाइनमेंट की जगह अरेंज हुआ है। वैसे ही अगर नंबर या कैरेक्टर को एक्सेस करना है तो हम क्या ऐसे यूज़ करेंगे, कैरेक्टर को हम ASCII वैल्यू या यूनिकोड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको इजीली एक्सेसिंग बनाता है। यहाँ आप पढ़ सकते हो इजीली। नेक्स्ट, मेमोरी ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन एंड सीक्वेंसी। हाउ CPU इंटरैक्ट विथ मेमोरी एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। अब हम पढ़ेंगे मेमोरी ऑपरेशन, CPU कैसे इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ता है या ऊपर से नीचे पढ़ता है, नीचे से ऊपर पढ़ता है, उसे हम अभी मेमोरी ऑपरेशन, इंस्ट्रक्शन और सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे। पहले मेमोरी ऑपरेशन, जैसे कि CPU प्राइमरी परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। पहला 2 ही ऑपरेशन मेमोरी यूज
परफॉर्म करता है, एक है लोड, एक है स्टोर। लोड क्या करता है, रीड करता है या फिच करता है डाटा। स्टोर क्या करता है, राइट या सेव द डाटा इन द CPU रजिस्टर। इंस्ट्रक्शंस, दिस आर द बेसिक कमांड्स द CPU अंडरस्टैंड। जो तुम्हें CPU से काम करवाना है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल ऐड, सब्ट्रैक्ट, लोड, स्टोर। इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग, इंस्ट्रक्शन अगर हमने कैसे सीक्वेंस में काम करता है, पहले है फिच। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो काउंट करता है कि गाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। अभी इमेजिन CPU फिचेस इनपुट 10, वो क्या करता है, एक मेमोरी लोकेशन 1000 में स्टोर कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। ये ऑटोमेटिकली टाइम क्लॉक पर डिपेंडेंट है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट एड्रेस दैट इज़ 1001 पे पहुंचता है, फिर इनपुट लेता है 11। वैसे ही लाइन बाय लाइन स्टोर करते हैं। ये फेच करने के बाद डिकोड करना होता है, वो काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो जो इंस्ट्रक्शन लिया है 10 या 11 उसे डिकोड करता है, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है, अंडरस्टैंड करता है, ऐड है, लोड है, सब्ट्रैक्ट है, execute the ALU update based on the instruction. The ALU executes the command, store the result, and finally one variable or any memory address, the result is stored. Example, load R0, the answer is or result is stored in R0. कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस, जो मैंने बताया था। हाउएवर ब्रेक और जंप इंस्ट्रक्शन कैन चेंज द प्रोग्राम काउंटर। अगर तुमने कहीं ब्रेक स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट यूज़ किया तो प्रोग्राम काउंटर का क्या होता है, वैल्यू चेंज हो सकता है। स्किप हो लूप या जंप क्या करता है, वो स्किप कर सकता है लूप को। इसकी वजह से ये फ्लो कंट्रोल जैसे फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट, स्टोर अल्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट, एड्रेसिंग मोड्स। वी हैव इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड बेस्ड, ऑफसेट एड्रेसिंग। आसान भाषा में बताओ, इमीडिएट एड्रेसिंग, द एक्चुअल डाटा और ऑपरेंड इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जैसे अगर मैंने कहा ऐड 10, तो 10 क्या है, डायरेक्टली मैं इमीडिएट एड्रेसिंग बता रही हूँ। 10 वैल्यू जो रजिस्टर R0 में रजिस्टर में स्टोर हुआ है। नेक्स्ट, रजिस्टर एड्रेसिंग। रजिस्टर एड्रेसिंग मतलब मैं रजिस्टर 1 का एड्रेस लेके रजिस्टर 2 में स्टोर कर रही हूँ। वैसे अगर रजिस्टर 1 में है ऐड A+B, उसका रिजल्ट फिर जाके रजिस्टर 2 में क्या है, R1, रजिस्टर 1 का जो एडिशन का वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करो 12 से। वो सब रजिस्टर एड्रेसिंग में होता है। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग में the instruction containing the complete and exact memory address where the operand is stored. डायरेक्ट एड्रेसिंग में डायरेक्टली हम एड्रेस एग्जैक्ट लोकेशन बता के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक a register or memory location that containing the address of the actual operand. It's like a pointer. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या करते हैं, हम एक पॉइंटर यूज़ करते हैं जो पॉइंट करता है ओरिजिनल वैल्यू, जिस अगर एग्जांपल लिया, प्रोग्राम काउंटर 1 10 पर पॉइंट किया है, ए पे पॉइंट किया है, तो ए क्या कर रहा है, वो दूसरा कोई बी का वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो वो प्रोग्राम काउंटर फिर बी पे जाएगा। वैसे फिर इंडेक्स बेस्ड और ऑफसेट एड्रेसिंग। इंडेक्स बेस्ड एड्रेसिंग में हम डायरेक्टली इंडेक्स देते हैं ताकि इजीली स्टोर कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर,